Hello everyone. So in this video students we will be discussing important current affairs for 28th of January. Students, here we will be talking about the top 3 performing states recently. Then we will be talking about Uniform Civil Code, that is UCC, where it has been implemented, which is the first state, why it has been implemented and what are the guidelines under it. Next thing we will be talking about a partnership that will be to enhance the maritime innovation. Next thing we will be talking about an international conference that was held in Bengaluru, Karnataka to mark the 125th anniversary of KSO. What is this KSO? We will be discussing it. Next thing we will be talking about the Ramsar wetland sites in India, and also we will be talking about a 500 crore rupees infusion into the IFCI through PREF. Why this has been done, all these things and many more will be discussed in this video. Students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise they are uploaded regularly. That will help you in your preparation in the long run. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. Dr. Arvind Pangaria has recently launched Niti Aayog's inaugural FHI 2025. What is FHI? FHI is your Finance or Fiscal Health Index. Fiscal Health Index. In this index, we are talking about the top 3 performing states, right? So Odisha is the state that is performing the best here in this report. This report will provide a evaluation about the 18 major Indian states that drive the Indian economy, right? The report is released on 5 indices, that is your quality of expenditure, revenue mobilization, fiscal prudence, debt index, debt sustainability and many more, right? Here it is Odisha that has secured the top position, then it is Chhattisgarh and Goa on the 3rd position. This report was released by which organization? It was released by Niti Aayog. Who is the Chief Executive Officer of Niti Aayog? BVR Subramaniam, headquartered in New Delhi, established in 2015. Who is the Chairman of Niti Aayog? The current Prime Minister of India, right? Prime Minister Narendra Modi. If we talk about this, here you can see this report provides a comprehensive evaluation of 18 major Indian states. And here if we talk about this fiscal health index, this report provides a comprehensive evaluation of the fiscal health of the 18 major Indian states in terms of their GDP, demography, total expenditure, revenues and overall fiscal stability. If they are having debt, what kind of debt they are having, amount of debt they are having, the interest that they are paying on that debt, what is the tenure of that debt, right? What is the amount of money that is being utilized by them in growing their state, in developing the infrastructure, job creation and many more, right? Here you can see if we talk about the states here, if we consider the achiever category, it was Odisha on top, Chhattisgarh and Goa. Then for front runner it is Maharashtra on top, right? Apart from Maharashtra, on second is your UP and on third is Telangana. Then if we talk about the performer states, it is Tamil Nadu on first, then Rajasthan, then Bihar, and for aspirational it is Kerala, West Bengal and Andhra Pradesh, right? Then one more thing students, here remember, as I mentioned, this report was released by which organization? It is Niti Aayog that recently released this report.
Next students, next we are talking about Uttarakhand. Uttarakhand became the first state in India that has implemented the Uniform Civil Code. Take a note of this. This question will be important, right? Can be asked, and this Uniform Civil Code will come into effect from 27th of January 2025. Correct. Who is the chief minister of Uttarakhand? As you can see it in the picture, Pushkar Singh Dhami is the chief minister, who has recently issued a notification that stated that they have recently implemented the Uniform Civil Code in their state. Now, what is this Uniform Civil Code all about? It is related, these under this UCC there will be laws that are related to marriage, divorce, succession of the property, inheritance, right? Ensuring the equality for all the citizens that will be, and here STs, that is your scheduled type, will be excluded from this UCC, right? As I mentioned again, this UCC will unify the personal laws that are related to marriage, divorce, succession of property, inheritance of property, and ensure the quality for all the citizens, excluding those from scheduled tribes. Here, if we talk about this, in 2024 on 7th of Feb, the Legislative Assembly of Uttarakhand passed the UCC bill, and on March 13, the bill was granted assent by the President Draupadi Murmu. Right. Apart from this, if we talk about this UCC, this will create a set of personal laws that will apply equally to all the citizens regardless of the religious belief. At present, the personal laws related to marriage, divorce, inheritance, adoption, maintenance are governed by their religious customs, and different communities, different religion have these different rules, right? But now under this UCC, everything will become equal irrespective of the religion. All laws that will be framed under this will be followed irrespective of the religion by everyone. Correct. Then here you can see this bill is divided into 4 parts. First part is marriage and divorce. Second part is succession of the property. Third, living relationship. Fourth, miscellaneous, right? And each part is also divided further. If we talk about section 4, it addresses the conditions of marriage, one of which is that neither party has a spouse living at the time of the marriage and requires a marriage at the age of 21 for men and 18 years for women. Also, the code also requires compulsory registration of marriage within the 60 days of the marriage. Then under section 25, both the parties, they are granted equal right to the petition to the court to dissolve the marriage through a decree of divorce, and divorce can only occur through court proceedings. Also, section 29 emphasizes that marriages can be dissolved only under the provisions of the code, that is notwithstanding any usage, custom, tradition or personal law of any other party to the marriage or any other religious beliefs, right? So everything will be handled by court here related to marriages. Correct. Then article 44, it is related to your Uniform Civil Code. This question can definitely be asked. Then if we talk about directive principle of state policy, here UCC is a part of DPSC part 4, that is under article 36 to 51, but the main article that you need to remember here will be article 44. Correct. Take a note of it. Then moving on students, it is DGS and CDAC. They have partnered to enhance the maritime innovation. We know that the maritime sector is growing. We are seeing various developments in the maritime sector. And even friends, today I was looking at a podcast, and in that they were showing a drone that is capable of landing and taking off from the water bodies itself, right? That will be specific for the water bodies only, right? So it will help the maritime sector to grow. It will help us to trade better. It will be beneficial in the logistics, right? And even the tourism will flourish here, right? So DGS, what is DGS? That is Directorate General of Shipping, and CDAC, that have partnered to enhance the maritime innovation. Correct. Here you will be seeing various technological excellence will be there. You will be seeing new technologies that will be coming into play, and with the advancement in technologies, various options for say various better services will be coming into play that will help to boost the maritime sector. Also, the focus will be on sustainable development in that area, and also the focus will be on digitization and automation in the maritime process. You will be seeing with various collection of data, right? Better analysis of the data can be done, and better use cases or better rules can be made out of that data that we will be getting, right? Then cyber security will be focused here, education in the maritime sector, training in the maritime sector, research and development in the maritime technologies will also be focused here, right? If we talk about CDAC, CDAC is your Center for Development of Advanced Computing. Who is the Director General here? Magesh Ethiranjan, headquartered in Pune, Maharashtra.
Moving on, IIA. IIA is your Indian Institute of Astrophysics. This is an autonomous institute. It comes under the Ministry of Science and Technology, and they have recently organized an international conference that was held in Bengaluru, Karnataka, and it was to mark 125th anniversary of KSO, that is Kodaikanal Solar Observatory, right? And if we talk about this, remember this conference was on scientific program that was created by 20 eminent solar astronomers, right? Here the focus of discussion was magnetism, solar magnetism, energetic solar phenomena, heliosphere, and many more. Also, this program highlights the new development in the solar astronomy, including the proposal of a new national large solar telescope in the Union Territory of Ladakh. Correct? Take a note of this. Question will be asked about the edition, which anniversary of this Kodaikanal Solar Observatory. Then who organized this international conference? It was organized by IIA, and the location where this was organized. Next is international affairs student. Wetland city accreditation. Here Indore and Udaipur became the India's first Ramsar wetland cities. Take a note of it, right? WCA, that is your wetland city accreditation, right? This is an independent advisory committee on the wetland city accreditation of the Ramsar conservation. They have announced 31 newly accredited wetland cities. This was during the 64th meeting that was held in Gland, Switzerland, right? Among these new accredited cities, Indore from Madhya Pradesh and Udaipur from Rajasthan, they became the first two Indian cities to receive the international accreditation as the wetland cities under Ramsar conservation. Now, the total number of the accredited wetland cities has reached 74. The accreditation here was granted by UNESCO under Ramsar conservation. Ramsar convention, correct? This accreditation, it is valid for how many years? It is valid for 6 years. So you need to remember how many total accreditations have been given so far. 74. 31 has been given recently during the 64th meeting held in Gland, and from India the two cities are Indore from Madhya Pradesh and Udaipur from Rajasthan. Next, here one more thing, remember, if we talk about Indore, Indore is the cleanest city in India, and Udaipur is also known as the city of lakes, right? Udaipur is your city of lakes and Indore, it is your cleanest city. Correct. Next thing you can see about this wetland accreditation, city accreditation. It is a voluntary accreditation system established by Ramsar Convention during the COP 2012 that was held in 2015, and it is to recognize the cities that have exceptional steps or taken exceptional steps to safeguard their urban wetlands. To qualify here, the city must meet 6 international criteria, right? That is to protect and perform the sustainable management there. Correct? Take a note of it. Next is Ramsar Convention. If we talk about it, this Ramsar Convention, it is an international treaty that is aimed at protecting and conserving the wetlands and their resources. It was signed in 1971 in Ramsar, a city in Iran, that came into effect in 1975. Right? Take a note of this. And also remember, India, our country, joined the Ramsar Convention in 1982, and as of January 2025, India has a total of 85 wetlands protected under this treaty. Next is banking and finance students. DFS, that is your Department of Financial Services. They have released 500 crore rupees capital infusion into IFCI through PREF. What is PREF? PREF is your preferential issues, right? So recently, Department of Financial Services, that comes under the Ministry of Finance, they have recently released 500 crore rupees capital infusion into IFCI, that is your Industrial Finance Corporation of India. This infusion will strengthen the IFCI's financial health in preparing for the upcoming restructuring and consolidation in a larger group. Here, this capital infusion plan for IFCI was approved in the first supplementary demand for grant for FY25 in the Lok Sabha. And here, if we talk about this preferential issue, what is this? It is when a company issues shares or convertible securities to a specific group of investors rather than through the public offering or rather going through IPO. This method is often used to raise capital and can involve offering shares to existing shareholders, venture capitals, or strategic partners that already held the shares. Correct. If we talk about IFCI, who is the Deputy Managing Director here? Rahul Bhave. Rahul Bhave, headquartered in New Delhi, established in 1948. Next is Check. They have launched Check Visor, right? That is India's first AI-powered
credit card expert. We know that AI is taking over students. It is taking, right, be it your software, be it your content writing or any other sector, you can see AI is coming into play now, right? Can you name the new AI chatbot that is making sounds, or that is, in talk of the town recently? It was launched by China. Name that chatbot, right? That AI chatbot. It is very powerful and it has shaken the market. The stocks are going crazy as of now, right? So name that. This is your homework. This is the talk of the town recently. It is a competitor even better than that of ChatGPT. So coming back, CheckU, that is a fintech company based in Bengaluru, Karnataka. They have introduced this CheckWiser. This is the first AI credit card expert, right? This check visor, it is will provide instant human like responses to the user's credit card questions through a simple chat interface, removing the need to search for information and analyze the expenses by category, right? It will provide your smart spend analysis feature that compresses the spending across all credit cards and merchants in one view. Next is awards and recognitions. Padma Award 2025 was held and President has approved 139 Padma Awards list that includes 7 Padma Vibhushans and 19 Padma Bhushans and 103 Padma Shri Awards. Right? So here you can see some of the awards that has been mentioned and this list goes on. Right? Go through the list once, right? And it is essential for you to remember some of them here. Correct? And remember, these Padma Awards, these are basically given on the recommendation that are made by the Padma Award committee that is constituted by Prime Minister. This question can definitely be asked students, that on whose recommendation the Padma Awards committee is established. It is made on the recommendation of Prime Minister, right? The nomination process is open to the public and even self-nomination is accepted here. Next, and here you can see some of the winners in this list that have been awarded with the Padma Awards. If we talk about the background here, Government of India established Bharat Ratna and Padma Vibhushan as two civilian honors in 1954. Initially, Padma Vibhushan was classified into 3 categories, that is Pehla Varg, Dusra Varg and Tisra Varg. Later, these 3 classes were renamed to Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Next is Indian short film, that is Anuja. It has been nominated for the 97th Academy Awards 2025. Take a note of this, students. Remember the name of the movie here. What is the name of the movie? It is Anuja. It has been selected for what? It has been selected for the 97th Academy Awards, right? And it has been selected under the Best Live Action Short Film category. This category is also important. Then this film is backed by Indian actress Priyanka Chopra and producer Guneet Monga as executive producer with Hollywood star writer Mindy Kaling. Also, this marks Guneet Monga's 3rd Oscar nomination after The Elephant Whisperers and The Period End of Sentence. Next, E-Plane Company became India's first to secure the DGCA's eVTOL certification, right? eVTOL means electronic or electric vertical takeoff and landing. That means if this is ground and then and this is your drone, this is the aircraft, then straight away vertically it can take off and land. So this is your VTOL. DGCA is your Directorate General of Civil Aviation. So this is the name of the company, E-Plane Company. This company is Chennai, Tamil Nadu based. It is an urban air mobility company, or we can say it is a startup. It is backed at IIT Madras and they became the first private company or first Indian private company that has received the certification from DGCA for VTOL, that is electric vertical takeoff and landing. That means this company is making the drones that is electronic and also it is capable of vertical takeoff and landing. Also, the name of the aircraft here is the E200X and the company here plans to launch this eVTOL services by 2026. Next is appointments and resignation. IDBI Bank, they have reappointed Rakesh Sharma as their Managing Director and Chief Executive Officer for 3 years. It will come into effect from 19th of March 2025 and the decision is approved by the Board of Directors after receiving approval from RBI. Next is ICC Chairman Jai Shah has been elected as the new member of the Melbourne Cricket Club, that is your MCC. Right, Jai Shah, who is the chairman of ICC, was elected to the board of members of the London UK based Merlin Cricket Club. Take a note of this important question. Direct question can be asked from here. There are some other members of this advisory board. These are the members here. Next is acquisitions and mergers. KMBL, that is Kotak Mahindra Bank Limited, they have completed the acquisition of Stan Chart's personal loan portfolio for 3,330 crore rupees. I repeat,
Kotak Mahindra Bank Limited, that is the leading Indian private sector bank, they have announced that it has completed the acquisition of 3,330 crore rupees personal loan book of Mumbai, Maharashtra based Standard Chartered Bank of India following the approval from CCI. Right, this acquisition includes all the personal loans that are classified as the standard advances, and the personal loans are a part of the unsecured retail loans, which includes retail microcredit, had 10.5% share in the net advances of the Kotak Mahindra Bank Limited. Next is Obituary, renowned cardiac surgeon and Padma Shri awardee Dr. K.M. Cherian, as you can see him in the picture, has recently passed away, and he was the first Indian, or he was the person who performed the India's first coronary artery bypass at the age of 82. He has recently passed away. He was born in 1942 and he was awarded with Padma Shri award. Correct? Take a note of it. Also remember, he performed his first open heart surgery at the age of 26 in 1968 in the Australia. Right, and also he became the first Indian to be designated as the president of the World Society of Cardiac Thoracic Surgeons. Next, he was awarded with Padma Shri when he was awarded with Padma Shri in 1991. Padma Shri is the fourth highest civilian award. Next is books and authors. A new biography, that is Sumitra Chatterjee and His World Vintage, released in West Bengal. This book will be published by Penguin India's Vintage Book, and this is the biography written by journalist Sanghamitra Chakrabarti. Next, if we talk about this book is basically talking about, or this book explores various insights into the cultural landscape of West Bengal. Moving on to important days. International Day of Clean Energy observed on 26th of January. This day is to raise awareness and encourage the actions towards a fair and inclusive transition to clean energy. Also, this year it was the second observance of International Day of Clean Energy. This day is observed by United Nations, right? And the first ever International Day of Clean Energy was observed in 2024. Next, here these are some of the challenges you can see that we are facing, right? And all the countries nowadays you can see are transitioning to the green energy. Reason being, because we want to make sure our environment is clean. We want to make sure that our surrounding, the environment that we live in is clean, so that the future generation can survive here. Also, on 26th of January we observed our Republic Day, and it was the 76th Republic Day that was observed. Can you tell me who was the chief guest here? Comment below. Next is your International Customs Day, observed also on 26th of January, and it is to highlight the role of custom officials and custom agencies in maintaining security, trade compliance, and measure anti-smuggling achievements. This year, remember, on 26th of January, it marked the 72nd anniversary of WCO, that is World Custom Organization. This is an intergovernmental body that is dedicated to enhancing the customs administrations worldwide. Moving on, students, these were your important current affairs for the day. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Next is, which bank has recently raised 10,000 crore rupees at a coupon rate of 7.23% through their 7th infrastructure bond issuance? It is SBI, State Bank of India, right? Coupon rate here is of 7.23%. That is, this much interest per month per year will be given. The tenure here will be for 15 years, and the amount raised here is 10,000 crore rupees. Next, name the portal that was launched by the Ministry of Statistics and Program Implementation to facilitate seamless access to official statistics in India. So it is e-Sankhi portal, right? This is the portal that was recently launched. This portal is designed to enhance the accessibility and will provide official statistics in India that are based on various surveys and census. And this e-Sankhi portal has been launched with its own API that will ensure the data accessibility by various platforms, that includes the National Data and Analytics platform. Next, which organization has recently celebrated the Diamond Jubilee on 26th of November in New Delhi? So which organization it is? It is National Federation of State Cooperative Banks Limited, and Diamond Jubilee is for 60 years. Right, here, where was this event held for this Diamond Jubilee? It was held at Bharat Mandapam in New Delhi. And Union Minister Amit Shah stated that in 2027, India will become the third largest economy in the world. Right, and it is expected that next year in 2025, we will become the fourth largest economy.
Next, which country has recently signed the final act of the Riyadh Design Law Treaty? So, which country signed the final act of Riyadh Design Law Treaty? It is our India, right? After the negotiations of almost 2 decades, this treaty has been adopted by the members of World Intellectual Property Organization. This will harmonize and simplify the registration process for various industrial designs. Next, which organization has recently signed an agreement with the India's Ministry of External Affairs to implement solar energy projects in Fiji, Comoros, Madagascar, and Seychelles? So, which organization signed this agreement? It is International Solar Alliance, that is ISA, the headquarter of which is in Gurugram, Haryana. Right? Take a note of this. Moving on, which of the following companies has not received the license by RBI to operate as a payment aggregator cross-border entity? So among the following, it is Razorpay. It has not received the license by RBI for payment aggregator cross-border entity, right? Cash-free payments, Amazon Pay, Aid in India, and BillDesk. They have all received this license. Next, in November, World Bank approved dash amount of funding for enhancing the landscape and ecosystem management project in Tripura and Nagaland. What is the name of this project? Element. Question can be asked that what is the name of that project for which World Bank has funded so and so amount for the landscape and ecosystem management in Tripura and Nagaland? It is Element. And vice versa can also be asked that Element project will be implemented in which two states? It will be in Tripura and Nagaland. So how much amount funding has been approved? It is $225.5 million funding has been approved. In this Element project, the target is to conserve and restore 1 lakh hectares of forest and biodiversity. Also, it will prevent 4,35,000 tons of carbon emissions to mitigate the climate change. Next is who has recently become the first Indian to host International Emmy Awards 2024. So, Veer Das, right? He recently hosted the 52nd edition of International Emmy Awards that took place in New York, USA, and he became the first Indian to host this event. Next, which platform has recently partnered with Urban Company to empower women salon and beauty parlor owners? So, Women Entrepreneurship Platform, right? They partnered with Urban Company and they are recently empowering the women salons and beauty parlor owners. Next, name the campaign that was launched by the Union Minister Annapurna Devi to eradicate child marriage and empower the young girls in India. So name of that campaign is Bal Vivah Mukt Bharat, right? This launch coincides with the 16 days of activism against gender-based violence. Also, this event marked the launch of Child Marriage Free Bharat portal. The aim of this campaign is to reduce child marriage below, to bring that the total number of child marriage below 5% by 2029, right? And under this law, it is prohibited to get a girl married under 18 years of age and boys under 21 years of age. Next, Union Minister Dr. Jitendra Singh has announced the selection of 8 startups to support DASH and the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System. So what is it? It is National Quantum Mission. Even if you remember, a chip Willow has been launched by Google and it is expected it will be one of the most advanced and important chip that will be used in large amount of computation or large processing where it is required, right? And it will be a game changer for AI. Next, where was the India-Singapore bilateral military exercise Agni Warrior held from 28th to 30th of November? So where was this held? It was held in Maharashtra, right? It was from 28th of November to 30th of November, and this was the 13th edition of this joint military exercise held in Maharashtra. Next, name the portal that was recently launched by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution that will enable the consumers to file their complaints. It is E-Dakhil portal, right? And it was first introduced on 7th of September 2020 by the National Consumer Dispute Redressal Commission. It will provide efficient and convenient way for the customers to approach the relevant consumer forum, right, and file for their grievances. Next, which bank has recently signed an MOU with MasterCard Impact Fund to enhance MSME financing across the Asia Pacific region? So, which bank has signed this MOU? It is Asian Development Bank, that is ADB, and this will help to enhance the MSME financing.
right? Under this partnership, MasterCard, they will give $5 million to the financial institution that will boost the lending in the MSMEs. And this grant will help to unlock $1 billion in Asian Development Bank financing for a period of 4 years. Next, Hemant Soren was sworn in as the Dash Chief Minister of Jharkhand. This marked Hemant Soren's Dash term as the Chief Minister of Jharkhand. So Hemant Soren was sworn in as the 14th Chief Minister of Jharkhand, and this marks Soren's 4th term as the Chief Minister of Jharkhand. So right option is option 2. Next, who has been recently elected as the 11th President of Asian Development Bank? So Masata Kanda has been appointed as the 11th President of Asian Development Bank. He will be succeeding whom? He will be succeeding Masasugu Asakawa. Next, from which submarine Indian Navy recently tested the K4 nuclear capable ballistic missile? So it is INS Arihat, from which our Indian Navy has tested this K4 nuclear capable ballistic missile. This K4 will have a range of 3,500 km. It is an upgraded version of the K15 missiles that were used on INS Arihat. And this INS Arihat, remember, this is India's second nuclear powered ballistic missile submarine. Next, for which year India has recently got the hosting rights for the Asia Rifle Pistol Cup? This is for the year 2026. This competition is scheduled to take place in New Delhi in 2026. Also, previously our country India hosted the 8th edition of Asian Air Gun Competition, that was in 2015, and the Asian Olympic qualifier in 2016. Next, which organization has recently signed an MOU with Research Society for the Study of Diabetes in India to advance quality and consistency of diabetic care in India? So which is that organization? It is National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. This MOU will leverage the distinctive capabilities of NABH to drive national quality certifications and accreditation programs in developing best practice clinical guidelines for diabetes management and research. Next is 18th edition of NCB International Conference and Exhibition on Cement, Concrete and Building Materials, held from 27th to 29th of November in New Delhi. Who received this NCB Lifetime Achievement Award in recognition of his exceptional contributions to the cement and concrete sector? So Dr. Nani Gopal, I correct, no, Dr. H.C. Viswarya, right? Dr. H.C. Viswarya has been awarded with the NCB Lifetime Achievement Award in recognition of his contribution to cement and concrete sector. The theme of the conference during which this award was presented is Cement, the Net Zero Future. Next, exercise Sinbex. This is a joint tabletop exercise held between Indian Army and it is held between the Cambodian Army. Right? Where was this held? Location, it was held in Pune, Maharashtra. Right? So this is between Indian Army and Cambodian Army. The exercise Sinbex, that is a joint tabletop exercise. This was this exercise, remember, in this question can be asked that where was this exercise held? So it was held in Pune, Maharashtra. And this exercise Sinbex had 20 personnel from both sides, and from Indian Army it was infantry brigade, from which we saw these 20 personnels. Next, according to Niti Aayog's report, that is India's booming gig and platform economy perspectives and recommendations of the future work, it was published in June 2022. The number of gig and platform workers is expected to increase to 23.5 million by what year? By FY 2030. Right, the gig force workers will constitute 6.7% of the non-agriculture workforce or 4.1% of the total livelihood in India by FY 2030. As per the estimation of the report, around 7 million, that include women, were engaged in the gig economy in 2021, which constituted 2.6% of the non-agriculture workforce, and it is expected that from 2.7 or 2.6% in 2021, it will increase to 6.7% in 2030. Also, this data report suggested that by 2030, it is expected that this gig sector has a potential to create 90 million jobs, and it will contribute 1.25% of the GDP. Next, in November, India was re-elected to the UN Peacebuilding Commission for the Dash term, consolidating its position in global peace
efforts. So India was re-elected to the UN Peace Building Commission for 25-26, and this is for positioning in global peace efforts. Correct? Take a note of this. Next is, to which country Russia handed over the BRICS chairmanship in the final Sherpa and Sherpa meeting of BRICS held in Russia in November. So Russia handed over the chairmanship of BRICS to Brazil, and Brazil was also the second BRICS country who opposed against the Belt and Road Initiative of China. Next, which country and India has recently signed a statement of intent to collaborate on design and development of electric propulsion systems for the Indian Navy? It is United Kingdom. Next, when is UN Day for Remembrance of All Victims of Chemical Warfare annually observed across the globe? It is 30th of November we observe this day, and the first ever day was observed in 2016. Next, which state hockey team has recently won the 14th edition of Hockey India Senior Men National Championship 2024? So, which country or which state hockey team has won it? It is Odisha State's hockey team that won it by 5-1 in the finals by defeating Haryana. Next, which company has recently signed an agreement with the Transport Department of the Government of West Bengal worth 226.18 crore rupees? It is GRSE, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. These vessels will have a catamaran hull design and will be built with aluminium and fiber reinforced polymer. Next, name the joint military exercise held between the Indian Army and Malaysian Army that commenced at the Pahang district of Malaysia from 2nd to 15th of December. What is the name of that exercise? It is Harimau Shakti. And in this, from Indian Army, remember, Meher Regiment. Personals from Meher Regiment took part. That is 78 persons from the Meher Regiment took part. Next, in November, Government of India and Asian Development Bank have signed a dash loan agreement aiming at enhancing the horticulture crop farmers' access to certified disease-free planting materials. So, Government of India and Asian Development Bank, they have signed $98 million loan here. Next, who has been recently elected as the first female president of Namibia for a period of 5 years? So, Nedampuli Nitumbu Nandi Nadaiwa, right, has been appointed as the first female president of Namibia. Next, in November, World Trade Organization General Council unanimously reappointed Ngozi Okonjo-Iweala as the 8th Director General for a consecutive 4 years term. This will be her second term that will begin on 1st of September 2025. Next, where was the inaugural session of the Global Soil Conference held in November? Where was it held? It was held in New Delhi. And the theme of this conference is Caring Soils Beyond Food Security, Climate Change Mitigation and Ecosystem Services. स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे सारे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछूंगा. पहला क्वेश्चन, आप बताओ नेशनल पेंगुइन अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है. दूसरा, अभी बताओ त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर के द्वारा 53rd स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करा किस दिन ऑब्जर्व करा. थर्ड, पराक्रम दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है. राइट. अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे. जरा बताओ, अभी खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, राइट, कहां पर हुआ था, कंट्री का नाम बताओ, स्टेट का नाम बताओ, कौन सा एडिशन था एंड विनर कौन रहा यहां पर, मुझे ये भी नीचे बताओ. अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और. राइट, टेल मी, विजय हजारे ट्रॉफी किन्होंने जीती. विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई. करेक्ट. टेक अ नोट ऑफ दिस. तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इफ यू फाइंड द सेशन इंटरेस्टिंग, डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब टू अस. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल. आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स 28 जनवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. हम डेली करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं. वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपके लर्निंग में कोई कमी ना आ सके. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स के बारे में. देन हम बात करेंगे पहली स्टेट जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को. राइट, इसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, किन चीज़ों के बारे में यूसीसी बात करता है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको देखेंगे. देन मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे अभी एक पार्टनरशिप की गई है. देन अभी एक
125th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई KSO की, जिसकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, IIA के द्वारा कराई गई थी, इनको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे इंडिया की पहली 2 सिटीज़ जो कि रामसर वेटलैंड सिटीज़ में भी ऐड की गई हैं यूनेस्को के द्वारा, इनको डिस्कस करेंगे। एंड एक 500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन देखने को मिला है IFCI में PREF प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड मैनी मोर न्यूज़ आज की वीडियो में रहेंगी, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं नेशनल अफेयर से। सबसे पहले अगर हम देखें, डॉक्टर अरविंद पंगारिया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया नीति आयोग की रिपोर्ट। इन बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, जो है इनॉग्रल एडिशन ऑफ FHI 2025। इनॉग्रल है तो मतलब हम कह सकते हैं पहला एडिशन है इसका। FHI क्या है? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स मतलब कौन सी स्टेट कितना पैसा ले रही है, कितना वो डेट है उनका, कैसे वो उस डेट को यूज़ कर रही है, कितना मनी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगा रही है, कितना वो अपनी GDP को ग्रो करने में लगा रही हैं, राइट, कैसे वो अपनी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने में लगा रही है, उनका एक्सपेंडिचर क्या है, फिस्कल स्टेबिलिटी क्या है बेसिकली उनकी, राइट। 5 की इंडेसेस जैसे रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, आपका डेट इंडेक्स, डेट सस्टेनेबिलिटी, एक्सपेंडिचर क्या है, क्वालिटी का एक्सपेंडिचर क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डाटा रिलीज़ किया गया, जिसमें ओडिशा स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया, सेकंड पे छत्तीसगढ़ आ जाता है और थर्ड पे गोवा आ जाता है। टेक अ नोट ऑफ दिस। नीति आयोग की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश इसको किया गया था 2015 में। ठीक है, यहीं पे अगर हम रिपोर्ट देखें, इनको कुछ डाटा में तोड़ा गया है, जैसे अचीवर कैटेगरी में ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा। फ्रंट रनर आ जाते हैं महाराष्ट्र के बाद आ जाता है यूपी सेकंड पोजीशन पे एंड तेलंगाना थर्ड पोजीशन पे। देन परफॉर्मर्स की बात करें, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। एस्पिरेशनल की बात करें, केरला, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। चलिए फिर हम बात करेंगे UCC की। आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जो आपको पता होना चाहिए। UCC का सबसे पहले तो आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 44 है। किस स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया? उत्तराखंड स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड बेसिकली ये लाया गया है ताकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आपके लॉज जो आपके मैरिज से रिलेटेड होंगे, राइट, डाइवोर्स से रिलेटेड होंगे, करेक्ट, सक्सेशन से रिलेटेड होंगे, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड होंगे, तो वो सारे रूल्स सेम यहाँ पे रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर, राइट। तो बाकी सबके जो लॉज हैं वो सेम रहेंगे। आपको यहाँ पे अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल शादी की बात हम करें तो आपको 60 दिन के अंदर यहाँ पे लीगली कोर्ट में रजिस्टर करना होगा शादी के लिए। अगर आपको डाइवोर्स भी चाहिए तो आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू ही यहाँ पे डाइवोर्स मिलेगा और कोई उसका तरीका नहीं है जो आप डाइवोर्स ले सके, राइट। 4 चीज़ों के लिए यहाँ पे हमें ये रूल देखने को मिलेंगे। ये 4 चीज़ कौन से हैं? ये आपकी मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शंस। ठीक है, जैसे 4 पार्ट मैंने दिखाया, 4 पार्ट्स हो गए, मैरिज एंड डाइवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप एंड मिसलेनियस। इन 4 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो UCC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात की चल रही थी एंड 44 आर्टिकल रहेगा इसका। उत्तराखंड ये पहली स्टेट बन गई है जिनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इनके चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया एंड यहाँ पे 27 जनवरी से ये लागू हो जाएगा आपका
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका डीजीएस एंड सीडीएसी ने पार्टनर किया टू एनहेंस द मैरीटाइम इनोवेशन। देखो सबसे पहले तो डीजीएस क्या है आपका, ये देख लेते हैं। डीजीएस है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। सीडीएसी क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इनके द्वारा भी एक पार्टनरशिप करी गई ताकि मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। देखो आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है, तो हमें मैरीटाइम सेक्टर में भी इनोवेशन लानी पड़ेगी। मैरीटाइम सेक्टर में भी हमें डिजिटलाइजेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऑटोमेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जो डाटा हमने अभी तक कलेक्ट किया है उस डाटा की मदद से कहाँ कमी आ रही है या फिर क्या बेटर यूज़ केसेस हो सकते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, उसके बारे में एजुकेशन देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर ये हमें पार्टनरशिप होती हुई दिखी है। सीडीएसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहेंगे मागेश अथिरंजन, हेडक्वार्टर रहेगा पुणे महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आईआईए जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इनके द्वारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई बेंगलुरु कर्नाटका में, जो कि 125वीं एनिवर्सरी थी ऑफ केएसओ कोडिकनाइल सोलर ऑब्जर्वेटरी की। राइट, यहाँ पर जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी ना, काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमर्स 20 एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा इसको कराई गई थी, जहाँ पे बात की गई सोलर मैग्नेटिज्म के ऊपर, एनर्जेटिक सोलर फिनोमेना एंड हीलियोस्फेयर के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की गई। इस प्रोग्राम के द्वारा एक नया सोलर एस्ट्रोनॉमी की डेवलपमेंट की भी बात की गई, जो कि है एक प्रपोज्ड नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, जो कि बनाया जाएगा लद्दाख में, जो कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख है। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पर। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन अभी दिया गया। राइट, ये दिया गया कहाँ पर, ये 64th मीटिंग के दौरान दिया गया, जो कि हुई थी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। राइट, उसके दौरान यहाँ पे वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि इसके दौरान टोटल 31 नई साइट्स को एक्रेडिटेशन दिया गया, जिसमें से 2 साइट्स हैं इंडिया की, इंदौर जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बोली जाती है, एंड उदयपुर जिसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। राइट, ये 2 वो सिटीज़ हैं जिनको साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया है यहाँ पर। करेक्ट, और जो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड सिटीज़ हैं अब वो 74 पहुंच गई है। यूनेस्को के द्वारा ये एक्रेडिटेशन दिया जाता है अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या है, ये ईरान में एक सिटी है जहां पर ट्रीटी साइन की गई थी कि हम अपने वेटलैंड्स को एंड उनके रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे 1971 में, एंड ये लागू 1975 में हुई थी। यहाँ पे इंडिया कब मेंबर बना था वेटलैंड का, इस रामसर कन्वेंशन का, तो इंडिया मेंबर बना था 1982 में। राइट, तो 2 साइट यहाँ पर है, मार्क करके चलेंगे। एंड ये वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की बात करें, रामसर कन्वेंशन के अंडर आता है, एंड इसको COP 12 जो कि 2015 में था उसके दौरान लाया गया था, ताकि हम अपने जो अर्बन वेटलैंड्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें, उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें। और इंडिया से 2 सिटीज़ को ऐड किया गया, जो है इंदौर मध्य प्रदेश में, उदयपुर राजस्थान में। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। डीएफएस ने रिलीज किया 500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू आईएफसीआई थ्रू प्रेफरेंशियल शेयर्स। अब ये प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर किसी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, रेदर देन पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। राइट, इससे क्या होता है, पैसा रेज किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट जिनको वीसी कहते हैं या फिर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे पैसा रेज किया जाता है। तो डीएफएस क्या है, डीएफएस है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इनके द्वारा यहाँ पे 500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया आईएफसीआई में। आईएफसीआई है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि उनको पैसा मिल सके, फाइनेंसिंग की जो दिक्कत है वो पूरी हो सके, एंड वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रख सके। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड विद दिस इन्फ्यूजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज देयर होल्डिंग इन द कंपनी बियॉन्ड 71.72% एज ऑफ सितंबर 2024। आईएफसीआई के जो डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, राहुल भावे। राहुल भावे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है चेक। ये इन्होंने चेक वाइजर लॉन्च किया, जो कि इंडिया का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड है। देखो एआई तो तहलका मचा रहा है पूरी दुनिया में। अभी चाइना के द्वारा एक एआई चैट बॉट लॉन्च किया गया, उसका नाम बताओ क्या रहेगा, जो कि चैट जीपीटी का राइवल है, उससे मच बेटर है, एंड उसी की बदौलत पूरी दुनिया में शेयर्स में पूरा हाहाकार मच चुका है। हर जगह यहाँ पे आप देख रहे हैं शेयर की सेलिंग हो रही है। यूएस की जो शेयर्स हैं, टेक शेयर्स हैं, उसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो एआई तो हर जगह आता जा रहा है। राइट, तो चेक के द्वारा भी ये चेक वाइजर नाम का इंडिया का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट लॉन्च किया गया, जो आपकी सारी क्वेरीज को
फुलफिल करेगा। ये चैट बॉट है जहाँ पर आप सिंपल चैट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। आपका जो स्पेंड होगा उसको ही एनालाइज कर देगा, राइट। आपके क्रेडिट कार्ड को मैनेज करेगा, करेक्ट। काफ़ी इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे। अभी पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। अब प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने 139 पद्मा अवार्ड्स यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जिसमें 7 पद्मा विभूषण, 19 पद्मा भूषण एंड 113 पद्माश्री अवार्ड किए गए हैं। आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण एंड पद्माश्री इसमें से कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा सेकंड हाईएस्ट है, कौन सा थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट, एंड कौन सा फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये 3-4 चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट के बताओ। मैं तो डेली आपको ये पढ़ाता हूँ, तो आपका काम है ये नीचे बताओ। पहले एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया ये आपका। आप ये लिस्ट देख सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग लिस्ट रहेगी ये, आप एक बार PDF में से ज़रूर पढ़िएगा, राइट। एंड यहाँ पे कुछ ये विनर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पद्मा अवार्ड्स की। अगर हम हिस्ट्री देखें, 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 2 अवार्ड्स को, भारत रत्न एंड पद्मा विभूषण। पद्मा विभूषण को 3 कैटेगरीज में लाया गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। लेटर ऑन इसको पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण एंड पद्माश्री में कन्वर्ट कर दिया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया की एक शॉर्ट फिल्म है अनुजा, जिसको नॉमिनेट किया गया 97th अकेडमी अवार्ड्स 2025 के लिए। इस किस कैटेगरी के अंडर? बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के अंडर। ये फिल्म बैक है बाय इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एंड यहीं पे अगर हम देखें गुनीत मोंगा की ये 3rd ऑस्कर नॉमिनेशन फिल्म रहेगी आफ्टर द एलिफेंट विस्परर्स एंड द पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ई प्लेन, ये कंपनी का नाम है। ये चेन्नई तमिलनाडु बेस एक स्टार्टअप है, IIT मद्रास के द्वारा इसको बैक किया गया है। ये वो पहला स्टार्टअप बन गया जिनको DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का EVTOL सर्टिफिकेशन मिला। ये EVTOL क्या है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब ये सरफेस है, ये आपका ड्रोन है या एयरक्राफ्ट है, तो ये वर्टिकली ऐसे टेक ऑफ कर सकते हैं, ऐसे ही ये लैंड कर पाएगा। इस एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा द E200X एंड ये वो पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, फिर हम बोले पहली कंपनी बन गई है इंडिया से, ई प्लेन कंपनी, जिनको ये EVTOL का सर्टिफिकेशन मिला है DGA से, एंड ये अपनी सर्विसेज 2026 तक लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। IDBI बैंक ने रीअपॉइंट किया राकेश शर्मा को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 19 मार्च। नेक्स्ट आ जाते हैं ICC के चेयरमैन जय शाह, इनको इलेक्ट किया गया न्यू मेंबर ऑफ द मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC के, ये अभी नए मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। यहीं पे अगर हम देखें ये कुछ और फाउंडिंग मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एडवाइजरी बोर्ड के। फिर आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। KMBL ये है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ये एक इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन्होंने एक्विजिशन ऑफ 3,330 करोड़ रुपीस का पर्सनल लोन बुक ऑफ मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो लोन बुक है इन्होंने एक्वायर कर लिया कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में, फॉलोइंग द अप्रूवल फ्रॉम CCI, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आ जाते हैं रिनॉन कार्डियक सर्जन एंड पद्माश्री अवार्डी डॉक्टर KM चेरियन, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका निधन हो गया है, राइट। एंड अगर बात करें इनकी 82 की एज में इनका निधन हो गया था। 26 साल के थे जब इन्होंने अपना पहली हार्ट की सर्जरी करी थी। इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था सन 1991 में, राइट। एंड 2000 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था फ्रॉम कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। अ न्यू बायोग्राफी जो कि है सुमित्रा चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड विंटेज, ये रिलीज की गई वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के कल्चर के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, राइट। इसमें उन्होंने जो एक्टर, पोएट, एडिटर, आर्टिस्ट, जो भी इनसाइट थी, जो भी कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, राइट। एंड सुमित्रा चैटर्जी ये यहाँ पे ऑथर रहेंगे इस बुक की, राइट। सुमित्रा चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड विंटेज ये बुक का नाम रहेगा, राइट। ये लिखी गई है किनके द्वारा? संघमित्रा चक्रवर्ती जी के द्वारा, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया गया था। 76 रिपब्लिक डे था। आप मुझे बताओ यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था इस बार? देन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी की बात करें तो क्लीन एनर्जी की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा एडिशन है ये इस डे का, राइट। एंड पहली बार इसको 2024 में ऑब्जर्व किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं।
कस्टम्स का इंपॉर्टेंस, राइट, वरना वो लोग चीज़ें स्मगल करने लग जाएंगे, इकोनॉमी पे काफ़ी इंपैक्ट आ जाएगा। इवन अभी भी आप देखते हैं कई सारी कंट्रीज से लोग जो सामान इधर उधर ले जाते हैं छुपाकर, वो एयरपोर्ट्स पे उनको कस्टम्स के द्वारा रोक लिया जाता है अगर वो पहले ही डिक्लेयर नहीं करते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार 72nd एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1953 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी एक थीम याद रखेंगे, कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो एनेबल करेगा कंज्यूमर्स को टू फाइल देयर कंप्लेंट। तो वो है ई दाखिल पोर्टल। आप इस पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक एमओयू साइन किया मास्टर कार्ड के साथ, ताकि एमएसएमई की फाइनेंसिंग की जा सके अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये किसके द्वारा किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मेन एम क्या है? एमएसएमईज को फाइनेंस करना, राइट। एमएसएमई की फाइनेंसिंग के लिए ये साइन किया गया है। एंड इससे क्या होगा, $1 बिलियन यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग की करेगा 4 साल के लिए, राइट। एंड इवन यहाँ पे पार्टनरशिप, ये तो हो गया टोटल। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं मास्टर कार्ड के साथ जो मिलेंगे वो है $5 मिलियन की यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाएगी। ये पैसा मास्टर कार्ड कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराएगा इंडिया में, जिससे फर्दर एमएसएमई लैंडिंग की जाएगी। एंड जो वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पे ग्रो करने का काम करेगा। एंड इसके थ्रू कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज विच चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ये 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। एंड इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, किनको अभी इलेक्ट किया गया 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वो है मसातो कांडा। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असाकावा को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सबमरीन, किस सबमरीन से भी टेस्ट की गई K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल? वो है INS अरिघात से इसको टेस्ट किया गया। INS अरिघात की बात करें तो ये इंडिया की 2nd न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक सबमरीन है, राइट। एंड ये जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है, ये K4 आपका अपडेटेड वर्जन है K15 मिसाइल का। एंड K4 की जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है कि 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, फॉर विच ईयर इंडिया रिसेंटली गॉट द होस्टिंग राइट्स फॉर एशियन राइफल पिस्टल कप। तो किस साल के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले? तो 2026 के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले हैं। एंड 2024 में याद रखेंगे इंडिया ने ISSF का वर्ल्ड कप फाइनल फॉर राइफल पिस्टल शॉटगन भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के साथ, ताकि एडवांस क्वालिटी की डायबिटिक केयर की जा सके इंडिया में? वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, अभी 18 NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स देखने को मिला 27 से 29 नवंबर तक। इसके दौरान NCB लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? वो है डॉक्टर HC विश्ववर्या। इनका जो सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, इसको ग्रो करने के लिए एंड नेट जीरो फ्यूचर सीमेंट सेक्टर में अचीव करने के लिए, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, सिनबेक्स एक्सरसाइज, ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई गई। मार्क करके चलेंगे, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में। ये एक्सरसाइज में 20 पर्सनल देखने को मिलेंगे दोनों साइड से। इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री ब्रिगेड से यहाँ पे देखने को मिले। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी? लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो पुणे महाराष्ट्र में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्यूचर वर्क, पब्लिश की गई जो जून 2022 में, द नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय व्हाट ईयर? तो 2029-30 तक 23.5 मिलियन यहाँ पर गिग वर्कर्स एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे। एक और डाटा बताता है कि 2030 तक जो पोटेंशियल है, राइट, ये तो हो जाएंगे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो है 90 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का बाय द गिग सेक्टर, राइट। ये 1.25% कंट्रीब्यूट करेंगे टू इंडियाज GDP। नेक्स्ट,
इंडिया ने अभी री इलेक्ट किया, इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर व्हाट टर्म, फॉर 25-26 के लिए री इलेक्ट किया गया है, इंडिया को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, टू विच कंट्री रशिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप, तो ब्रिक्स ने ब्राजील को हैंड ओवर कर दिया अपनी चेयरमैनशिप। एंड याद रखेंगे ब्रिक्स नेशन से दो कंट्रीज ऐसी हैं, एक इंडिया एंड एक ब्राजील, जिन्होंने चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को मना कर दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट, विच कंट्री एंड इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो कोलैबोरेट करेंगे ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रपोल्शन सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी, तो वो है यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड यूके। नेक्स्ट, when is UN Day of Remembrance for all victims of chemical warfare annually observed across globe, कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व करते हैं 30 नवंबर को। नेक्स्ट, किस स्टेट की हॉकी टीम ने रिसेंटली अभी जीता 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2024 को? तो ओडिशा की टीम ने जीता। ओडिशा की टीम ने हरियाणा को हराया बाय 5-1 इन द फाइनल्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ वर्थ 226.18 करोड़ रुपीस का। ये कॉन्ट्रैक्ट गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, राइट। यहाँ पे 13 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज को डिलीवर किया जाएगा अंडर द वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। इससे क्या होगा, जो वेसल्स हैं, राइट, उनमें ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जिसमें इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि पेहेंग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी ऑफ मलेशिया। इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ये है आपकी हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज, राइट। ये 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुआ था, और कहां पर? मलेशिया में इस एक्सरसाइज को देखने को मिला था। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि इंडियन आर्मी में किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, किस रेजिमेंट के पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया? तो महर रेजिमेंट का यहां पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, 78 पर्सनल्स फ्रॉम महर रेजिमेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, एक लोन अग्रीमेंट, जिसका एम रहेगा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर्स को बेटर यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स मिल सके, बेटर पेस्टिसाइड्स या फिर बेटर एग्रीकल्चर का खाद, आपकी सारी ये चीज़ें मिल सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का अग्रीमेंट साइन किया? $98 मिलियन का यहाँ पे सेटअप किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 6 क्लीन प्लांट सेंटर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, बेटर लेबोरेटरीज होंगी वहाँ पे, ट्रेन स्टाफ होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे की जाएगी, ताकि प्रोड्यूस को यहाँ पे ग्रो किया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? सो नेदुम्पिला नेटुम्बो नांदी नादियावा, राइट, इनको अपॉइंट किया गया, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली रीअपॉइंट किया नागोजी ओकोंजो येवला को एज द 8th डायरेक्टर जनरल फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव 4-year टर्म, एंड इनका जो सेकेंड टर्म है 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड नवंबर 2024 में? तो कहां पर हुआ था इनॉग्रल सेशन इसका? ये हमें देखने को मिला था न्यू दिल्ली में, ठीक है। सॉइल हेल्थ पर, सॉइल मैनेजमेंट पर, सॉइल को कंजर्व करने के लिए ये इवेंट देखने को मिला। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली चोजन एज द यूएस एम्बेसडर टू द नेटो? तो यूएस एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं टू नेटो? वो रहेंगे मैट विटेकर, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान, जिसको हम एसेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से जानते हैं, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको 9 साल पूरे हो गए हैं ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑन 3 दिसंबर 2024। तो अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान ये लॉन्च किया गया था? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट फॉर द शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग ऑफ द इंडियन नेवल शिप INS विक्रमादित्य? तो वो है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे INS विक्रमादित्य के जो इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, एंड ताकि आज की जनरेशन के हिसाब से उसको यहाँ पे लाया जा सके। 1207.5 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड 5 महीने के लिए ये रिफिटिंग चलेगी। नेक्स्ट, गुजरात की किस साड़ी को अभी GI टैग मिला? तो वो है घरचोला साड़ी को, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली
एक रिपोर्ट आई साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स की बाय इंडियन कंपनीज, जो कि रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स के द्वारा। ESG होता है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग के द्वारा। इंडिया की यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? 6th रैंक रहेगी ग्लोबली। अगर मैं बात करूँ ग्लोबली किसने टॉप किया, तो यूके ने टॉप किया। इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 127 कंपनीज रहेंगी यहाँ पे। यूके की कितनी कंपनीज हैं? 702 कंपनीज ने यहाँ पे कमिट किया टू द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज की लिस्ट में, जो कि सिप्री के द्वारा रिलीज की गई है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की 3 कंपनीज है टॉप 100 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43rd, BEL 67th पोजीशन पे एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे। तो इंडिया में तो हॉल ने यहाँ पे टॉप किया, ग्लोबली लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पे टॉप किया है, इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, जो कि USA की कंपनी है। नेक्स्ट, अभी USA ने अप्रूव किया $1.17 बिलियन की डील, ताकि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर्स एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके इंडियन नेवी को। राइट, इंडियन नेवीज सिकोर्स्की MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए। राइट, तो इसको अपडेट किया जाएगा यहाँ पे। एंड सी हॉक किंग जो हमारा हेलीकॉप्टर है, 3 डेकेड से भी ज्यादा जो इंडियन आर्मी में काम कर रहा है, उसको ये रिप्लेस करने का काम करेगा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, OECD की इकोनॉमिक आउटलुक आया दिसंबर के लिए। इन्होंने इंडिया का जो GDP फॉरकास्ट है 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया टू 6.8%। देन नेक्स्ट आ जाते हैं रुमाना सिन्हा सेगल। ये फॉर्मर एक मेंटर है हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड टी हब के लिए, टेक्नोलॉजी हब, एंड अक्षय देशपांडे की द एसोसिएटेड स्टार्टअप फाउंडर ऑफ स्विच को। इनको यहाँ पे रिसेंटली ऑनर किया गया करमवीर चक्र अवार्ड से। तो किन किन को? रुमाना सिन्हा सिंगल एंड अक्षय देशपांडे को। करेक्ट। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट किया ये करमवीर चक्र अवार्ड्स विद द कन्फेडरेशन ऑफ NGOs, तो वो है यूनाइटेड नेशन। देखो ये करमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है बेसिकली जिनकी इनिशिएटिव से या टेक्नोलॉजी से सोशल चेंज यहाँ पर आया और सोशल इंपैक्ट हमें देखने को मिला। राइट, तो इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, अक्षय देशपांडे एंड रुमाना सिन्हा सेगल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे सारे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, आप बताओ नेशनल पेंगुइन अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा, अभी बताओ त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर के द्वारा 53rd स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करा, किस दिन ऑब्जर्व करा। थर्ड, पराक्रम दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है। राइट, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे, जरा बताओ अभी खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, राइट, कहां पर हुआ था, कंट्री का नाम बताओ, स्टेट का नाम बताओ, कौन सा एडिशन था एंड विनर कौन रहा यहाँ पर, मुझे ये भी नीचे बताओ। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और, राइट, टेल मी विजय हजारे ट्रॉफी किन्होंने जीती, विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इफ यू फाइंड द सेशन इंटरेस्टिंग, डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब टू अस।